साल भी मैंने देखा था कि एग्री एडिक्ट से बहुत ज्यादा टॉपर्स निकले थे। शायद हम्म। मैंने एक पॉइंट पे मैंने भी सोचा था कि काश एग्री एडिक्ट का कोर्स ले लिया होता तो अच्छा रैंक आता। So, hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. I'm your mentor Arifasad SK. So, today in this video, we have All India 24 rank topper from ICR PG exam Plant Sciences in the year 2024. Her name is Amini Thakur. I welcome you to this session, Amini. So, before we start this session, I'm very much excited to know the preparation strategies that you have followed and the complete list of books and the way you have prepared for these exams. And also, I'm very much happy that you are here to share your preparation strategy with all of your juniors or the upcoming ICR PG aspirants. By watching this video, definitely the students will be getting a lot of benefit and help regarding what strategies to follow and what are the books to be referred and how a student should go for a preparation like for this exam, like the exams like ICR PG exams of plant sciences and any other subjects. So I welcome you to this session. So before we start, please introduce yourself. Hello, sir. Hello, everyone. My name is Yamini Thakur, and I come from Himachal Pradesh, and I'm a graduate in horticulture from Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, Himachal Pradesh. And I passed out in June this year, and I appeared for ICR AIEEA PG Land Sciences exam, and I secured 354 marks and the rank 24th, and I have been allotted to IRI Jharkhand in the Department of Genetics and Plant Breeding. Okay. And I hope, like my preparation journey, some of the students find helpful. Okay, definitely not some many students will be definitely getting benefited from the information that you will be giving in this video. So first of all, congratulations on getting allotted to IRA Jharkhand. I hope like your future journey will be Thanks. very much good and you will be successful in your upcoming studies and your career. Okay. So yeah, like you are comfortable in Hindi or English? So both, so we can do it Okay, bilingual. let's do it in a both so that like students who are wanting to be in Hindi like they will be also able to understand and जो भी students like English में चाह रहे हैं वो like उन लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या आप बात कर रहे हैं और तुम्हारा क्या preparation strategies था. So पहला चीज मैंने Yes. यहाँ पे notice किया था कि तुम like you basically belong to horticulture. So how exactly Yes. you made up your mind to that you will be coming for the plant science and you will be competing in this subject? Since like plant science में ही है जो ज्यादातर कंपटीशन है और ज्यादातर स्टूडेंट्स भी है और ज्यादातर सीट्स भी है. तुम्हें क्या So, आइडिया था इसके बिहाइंड कि तुम शिफ्ट कर रहे हो हॉर्टिकल्चर टू एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स? या so like आपने mention किया कि I come from a horticulture background, so it's a disadvantage for me. It was a big disadvantage for me. But उस टाइम पे like हमारा फर्स्ट ईयर ऑफलाइन गया था, ऑनलाइन गया था. उस टाइम पे कोर्सेज का उतना नहीं पता था कि कौन सा कोर्स है, कौन सा उतना अच्छा लग रहा है. फिर जब हम सेकेंड ईयर गए तो पैथोलॉजी का कोर्स लगा था, तो और एंटोमोलॉजी का कोर्स लगा था, तो वो दोनों सब्जेक्ट्स मुझे थोड़े से इंटरेस्टिंग लगते थे. उसमें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ समझने वाली बात है. So like but I found entomology a bit difficult. So I thought like pathology is my thing. So I should search subject which includes pathology. And then sir like मुझे बहुत लोगों ने discourage किया कि like don't take this subject. There is so much competition. Students from agriculture are going to compete with you. But मैंने वो सब कुछ भी नहीं सोचा. पहला reason था pathology. देन सेकंड रीजन मेरा था सर कि मैं उस टाइम पे यूपीएससी की और जाना चाह रही थी. तो हॉर्टिकल्चर तो यूपीएससी में ऑप्शनल है ही नहीं. सो लाइक आई लुक्ड थ्रू द एग्रीकल्चर ऑप्शनल सिलेबस, एंड जो उसका ऑप्शनल नंबर 2 होता है, लाइक दैट कवर्स अ ह्यूज पोर्शन फ्रॉम द प्लांट साइंस सब्जेक्ट. So like these two reasons, pathology and then the UPSC optional agriculture, these two reasons took okay. me into To this sum, subject. okay, to sum up, like if someone asks like why from horticulture to agriculture, you have two important reasons. One is like Yes, your love towards the subject of plant pathology, and other thing is for preparing for this UPSC exam, where the one of the optional subject will be agriculture. yes, These things made you to decide that you will be giving your exams for plant sciences in spite of a lot of competition that you already knew. Okay, that's yes, great. sir. एंड यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है. तुम बोल रही थी कि लाइक यू लव
plant pathology. Then why genetics? तो जब स्टार्ट किया था तो आई यूज टू लाइक पैथोलॉजी, बट लाइक एज आई स्टडीड द सब्जेक्ट, so my interest grew in breeding. Okay, breeding. And yes, sir, it's an irony. I found like later on I used to find pathology really difficult. Mhm. And in my exam as well, like I made most of the questions wrong in pathology section. So like Okay. initially I used to like pathology a lot, but then my interest like Okay, your interest declined. shifted from like pathology to genetics. That's why you Yeah. landed up in taking genetics for your MSc. Okay. Yes, sir. Very good. Like all the best for your future studies also. So let us begin the sessions where we'll discuss about the complete list of books, so starting with the syllabus of the plant Yes, sir. sciences and how you have dealt with each of these units, and what are the reference books that you have referred for cracking these exams. Okay, you can Yes, start. sir. सर, द फर्स्ट एंड foremost थिंग जो मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी में की थी, एंड आई सजेस्ट अदर्स एज वेल, is to go through the syllabus first. Okay, Like it's get a, mandatory. Yes. yes, sir. Okay, okay. Continue. And so like get a feel of the subject, what the subject asks from you, what are the topics, various topics covered, what are the subjects that you will need to deal with. So these things like take a week, okay? Like आप एक हफ्ता अच्छे से इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर एक बार अपने आप को एनालाइज कीजिए कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा डिमांडिंग है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, लाइक क्या क्या मैं ये कर सकती हूँ, शुड आई डू इट? और अगर आपको इस सिलेबस देखने के बाद आपका अगर प्योर इंटरेस्ट है तो ही आप इस सब्जेक्ट की ओर जाइए, नहीं तो फिर थोड़े कंपैरेटिवली इजियर सब्जेक्ट्स भी हैं, आप उनकी ओर भी जा सकते हो. फर्स्ट थिंग विल बी सिलेबस. Oh, fine. This is regarding the syllabus. The students, like when you are going to approach any exams or preparing for any of the exams, जब भी तुम लोग कोई भी एग्जाम्स देना चाहोगे तो पहला चीज होगा कि सिलेबस लाइक ऑब्वियसली लाइक हर कोई सिलेबस को देखता है, लेकिन सिर्फ सिलेबस को देखने से मतलब कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा. हर एक सब्जेक्ट को, हर एक यूनिट को ब्रेक करके और उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स को रख के साथ साथ में पैरेलली एनालाइज करके ही पता चलता है कि कौन सा टॉपिक का क्या वेटेज रहता है और कहाँ से पिक कर लिया जाता है क्वेश्चंस को और कौन सा रेफरेंस बुक और तुम लोगों को जाना चाहिए. So this is how it is. So always keep the syllabus and also the previous year question papers parallelly and try to break each and every single unit, each and every single topic, and then analyze like which are the key and the important areas that you have to focus and start from there so that the subject and the units get easy for you. Okay, so this is regarding the syllabus. So can we move to the next slide? Yes, sir. And one thing I will mention, like start from unit 2, your preparation start from unit 2. Like you can cell organelles, mitosis, meiosis, these are from genetics. So like try to pick the major topics and cover them first. Like go with unit wise. That will be तो helpful. ज्यादातर स्टूडेंट्स लाइक क्या करते हैं कि बीडी सिंह का जो लाइन टू लाइन है, चैप्टर टू चैप्टर है, Yes, ऐसे sir. जाते हैं. लेकिन यामिनी, like you are saying like you have gone with the unit wise based on syllabus. Yes, sir. Yes, you have chosen the topics that I've mentioned first here. You have prioritized these things, and this is how you have covered the syllabus, right? Yes, sir. Okay, ठीक. So students, like you can also follow this. Next, you have something interesting here. Please explain. Yes, sir. Like I am from a maths background. I didn't study biology in 11th, 12th. Okay. And most of the people in this subject are those like who are preparing for NEET, who come from biology background. Yes, So yes. like math student, they generally feel they are afraid of this subject. Mm. Like so, mine was the same case. I came from a maths background, so things were a bit more difficult from this point of view. Also, coming from a maths background. So what you can do is like you can refer to class 11th and 12th biology NCRT books, Okay. So like it is. before going to BD Singh, genetics BD Singh, because the language in BD Singh is quite complex, and if you want to like make your basic concepts strong, you should I think go for NCRT.
Like very important chapters can be the cell cycle, photosynthesis, respiration. And from class 12, there's a chapter molecular inheritance. So you can refer to these books, and after then go for YouTube NEET preparation videos. Like there the things will be very simpler and very elaborated. So this was my approach at least. Like first build up your core concepts. So this is like if someone like students, if you are from the same story, like if you have a same story where like a PCM is your background and you are coming up with the plant sciences, like you are going to give this exams, then this is the some like homework that you have to do so that things will get easier for you comparatively to the others, because for the others who are from the biology background, they will be already having the basics that are very much clear, and they might find bit easier to understand the standard books for the agriculture. But for you, if you are from the PCM background, you have to definitely do this homework so that the journey gets easier for you to. Okay. And Yamini, like she has mentioned it, and this is very much important. The students like who are from PCM background can relate for this. Okay. So can we go for the next slide? Yes, sir. Okay. Yeah. Then the subjects. The major subjects are like we all know genetics, plant breeding, pathology, seed science, and microbiology. It can be in either portion, and your minor Very subjects normal. Yes. can be our physiology, biochemistry, general agriculture. Try to cover the major subjects first, and try to revise major subjects first, and only after then go to minor subjects. So this is for the subjects of plant sciences. She has given a complete list of the major and the minor subjects. Okay. Next. So let us start with the genetics. You can just tell us like what are the different standard books or the reference books that you have used for your preparation for the subject of genetics. यस सर जेनेटिक्स के लिए आप बीडी सिंह पे बहुत कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं लाइक दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर जेनेटिक्स कुछ लोग थोड़ा कुंदन सिंह के लिए भी जाते हैं कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इजी है बट पर्सनली मैंने कुंदन सिंह रेफर नहीं की थी So like तो you बीडी have only सिंह gone for the BD Singh, not Kundan Singh. यस सर ओनली बीडी सिंह एंड बीडी सिंह में भी दो अलग अलग बुक्स आते थे पहले। वो एक था फंडामेंटल्स ऑफ बीडी सिंह और एक था जेनेटिक्स बाय बीडी सिंह। लाइक फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स और जेनेटिक्स, तुम इन दोनों फंडामेंटल में। ओके, यू हैव गॉन फॉर द फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। ओके। यस सर सो नेक्स्ट, ये तो हो गया पहला चीज। इट्स मैंडेटरी लाइक whoever prepares for this ICR PG plant sciences, the very first book for genetics they can go for the BD Sync. But as you यस mentioned, the language is bit complicated to understand. But if you go for the repeated readings, then obviously like, you'll be able to understand this. Okay. Next. सर जेनेटिक्स मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगी कि जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है Mhm. उसके लिए आप स्पेशली यूट्यूब पे यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं लाइक बहुत सारे चैनल्स है एग्री एडिट के भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है आजकल लाइक मॉलिक्यूलर मार्कर्स पे बहुत अच्छे वीडियोस डाल रहे हैं तो आप उन्हें जरूर रेफर करें क्योंकि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इजीली समझ नहीं आता है like, मुझे तो नहीं आता था तो Mhm. और कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे आपके ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्जुगेशन वो टॉपिक्स भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पहले आप यूट्यूब से एक उनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं या फिर अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो वहां से आप एक थोड़ा आइडिया ले सकते हैं उसके बाद आप बुक पे जाइए और जैसे भी आपको नोट्स बनाने बट आई सजेस्ट कि रिवीजन बुक से ही कीजिए बिकॉज आजकल असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो अ, उसके लिए आपको रिवीजन बुक से ही करना चाहिए आई गेस Okay. So this is regarding particular unit for within the with particular part in the genetics, which is molecular genetics. The molecular यस genetic is bit complicated, might be bit complicated for the freshers who are actually preparing for these exams. For this, like what Amini has done is like she has went for the different sources, mainly in the different YouTube channels. She has cleared her basics and then she has went to this book, and this has helped her in understanding the concepts of the molecular genetics. Okay. उसके साथ साथ तुमने कुछ न्यूमेरिकल्स का भी यहाँ पे मेंशन किया है। यस सर सो लाइक हर साल 2-3 न्यूमेरिकल्स आते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से
तो वो आपको जरूर करने हैं, क्योंकि लाइक द न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो सेम वैसा ही न्यूमेरिकल आता है। एंड सर शायद लाइक आपके भी कुछ दो तीन वीडियोस हैं न्यूमेरिकल्स के, तो न्यूमेरिकल्स उन्हीं वीडियो से आए थे, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आया था, तो आई हाईली सजेस्ट दोस। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ये तो हो गया स्टैंडर्ड बुक फॉर द क्लैरिफाइंग और क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट तुमने ऑब्जेक्टिव्स का भी मेंशन किया है, तुमने इसको कैसे यूटिलाइज किया था तुम्हारे प्रिपरेशन में? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। लाइक जब मैंने एक दो बार ही अपने जेनेटिक्स का रिवीजन किया था, तो फिर मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट सिर्फ मैंने इसे एक बार ही सॉल्व किया था, बहुत पहले। उतना मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आप इसे स्किप कर सकते हो शायद। अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे लगा रहे हो तो आप इस बुक को स्किप कर सकते हो। Okay. Students can skip this book if they are इफ दे preparing आर well. अटेंडिंग मॉक टेस्ट ओनली देन। Okay. If attending mock test. यस सर। Yeah. Next. सो नेक्स्ट इज जेनेटिक मेड इजी। ये बुक लाइक आपको लास्ट में आई गेस रेफर करनी चाहिए व्हेन यू आर डन विद योर मेन बुक। एंड इसमें भी लाइक आपको दो तीन दिन लगेंगे इसको कवर करने में। इसमें कुछ लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक साइटोजेनेटिक्स, क्यू बेंडिंग वगैरह टेक्निक्स, वो आपको बीडी सिंह में नहीं मिलेगी उतनी ज्यादा। और कुछ कुछ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शायद बीडी सिंह में मेंशन ना हो, तो लाइक उन पॉइंट्स को आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए, लाइक जस्ट गो थ्रू देम। ओके, सो इसमें मेनली चीजें वही इंपॉर्टेंट है जो मतलब मेन बुक में नहीं है, वो साइटोजेनेटिक्स के पार्ट है और कुछ कुछ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। एंड फॉर ओवरऑल रिवीजन ऑफ दिस जेनेटिक्स यू कैन रेफर दिस जेनेटिक मेड इजी। एंड माय पर्सनल सजेशंस, जो जेनेटिक मेड इजी है वो ज्यादातर जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो निकालते हैं वो वाला यूज करते हैं। इसमें जो पूरा कंटेंट है ये पूरा मतलब पीजी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी तुम लोगों ने पीडीसी से पढ़ा है और जो भी तुम्हारा सिलेबस में है उसको फोकस करके तुम इस बुक में रिवीजन करो ताकि उसका ज्यादातर बेनिफिट मिले। बाकी तुम लोग सब कुछ याद रख सकते हो इस बुक से, लेकिन कुछ उसका ज्यादातर फायदा नहीं होगा। ओनली स्टिक टू द सिलेबस, विद इन सिलेबस जो भी तुम्हारा कंटेंट है इस बुक में उसको फॉलो करना और उसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, फॉर प्लान ब्रीडिंग। Plant breeding. So like for this subject, like you just need to read one book. That's Plant Breeding Principle and Methods by BD Singh. ये आपका like 90-95% शायद क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कवर कर लेगा। एंड बीडी सिंह मैंने शुरू से लास्ट तक हर चैप्टर पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। और ब्रीडिंग मेरा शायद एक स्ट्रॉन्ग एरिया था इस एग्जाम में। एंड इस बुक में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है। आईपीआर वाला जो चैप्टर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें शायद आपको थोड़ा सा किसी और रिसोर्स से हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फॉर कुछ चीजें। आईपीआर। ठीक है सर, आईपीआर इस साल क्वेश्चन नहीं आया था, बट ऐसे क्वेश्चन शायद आ जाते हैं, मेरे पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे, तो उसके लिए आप यूट्यूब या किसी भी रिसोर्स की हेल्प ले सकते हो। बाकी आई डोंट थिंक कि प्लांट ब्रीडिंग के लिए आपको किसी भी और चीज को छूने की भी जरूरत है अदर देन दिस बुक। Okay. So next objective, like how like utilize this book for your preparation. सर ऑब्जेक्टिव्स भी सर मैंने एक बार ये बुक सॉल्व की थी। एंड अगेन अगर आप कहीं पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो यू कैन स्किप It's दिस। not necessary, not यस mandatory. You can say like not necessary. If यस सर like students are attending regular mock test and they are facing the standard set of questions for these exams, then they can skip यस this. सर And supplementary to this, like you have also referred the YouTube videos for the particular topics like which you have not been understanding from the books, and also like obviously numericals from the Agri has helped in your preparation for this plan video. Okay, that's great. यस सर। लाइक द So like the biotechnology portion of this book, I covered biotechnology from this book only. उसके लिए आप YouTube वीडियोस पे जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। और Okay, for आपकी जो biotechnology यूट्यूब। specifically, they can go for the YouTube videos. यस सर। Okay, yeah, that's great. So this is for the plan building. Anything else to be discussed here? नो सर सर। Okay. Next, we have just covered the genetics and plant breeding. Now let us talk about the plant pathology, which is the another major subject in case of plant sciences. यस सर।
सर पैथोलॉजी के लिए फर्स्ट आपको अपने जो भी यूजी के नोट्स है, प्लांट पैथोलॉजी के 2-3 कोर्सेज लगते हैं। पहले आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद आप एचसी दुबे रेफर कर सकते हैं, फंजाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस। एंड इस बुक को आपको बहुत थॉरो पढ़ना है। मतलब 3-4 बारी पढ़ के ही इसमें से चीजें शायद आपको याद रहेंगी। उसके बाद क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो हमने फील्ड क्रॉप्स की डिजीजेस नहीं पढ़ी थी। आई हैड टू रेफर टू दिस बुक, डिजीजेस ऑफ फील्ड क्रॉप्स बाय वीके गुप्ता एंड वाइस पॉल। सो यहाँ से मैंने फील्ड क्रॉप्स के डिजीजेस कवर किए थे, मेन क्रॉप्स। देन उसके बाद मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी बाय एच सी दुबे। इस बुक में आपका लाइक मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से दिया है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन काफी डिटेल्ड है। और बहुत सारी जो ऐसे हिस्टोरिक डिजीजेस हैं जैसे कि डच एल्म, पनामा विल्ट, वो सभी डिजीजेस बहुत अच्छे से कवर्ड है। ओके। उसके बाद मैंने प्लांट पैथोलॉजी एट ए ग्लांस रेफर की थी बाय उत्पल कुमार भट्टाचार्य। इसमें काफी क्रिस्प पॉइंट्स आपको मिलेंगे, कुछ आपको शायद ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने पहले दूसरी बुक्स में ना पढ़ी हो। और आपको जो इम्पोर्टेंट फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स है उनकी भी आपको डिजीजेस कवर करनी होगी, तो वो तो मैंने अपने क्लास नोट से ही कवर की थी। आप किसी यूनिवर्सिटी साइट, किसी कोचिंग मटेरियल या फिर किसी बुक को रेफर कर सकते हैं जी। Okay. So this is for the plant pathology. Yeah. यस सर। Next, seed science and technology. सीड टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपके यूजी के क्लास नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना डिफिकल्ट नहीं आता है। आप थोड़ा अच्छे से उस पर फोकस करोगे तो आप सारे क्वेश्चन सही लगा सकते हो। तो हमारे लिए अगेन फील्ड क्रॉप्स का सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज नहीं था कोर्स में, तो मैंने सीड टेक्नोलॉजी बाय आर एल अग्रवाल रेफर की थी। इसमें आपको फील्ड क्रॉप्स का सीड प्रोडक्शन मिल जाएगा। एंड जैसे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे राइस में रो पुलिंग होती है, वो सब चीजें इस बुक से कवर हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने चाहिए जहाँ पर आपको वो क्रॉप्स मिल रही है। उसके बाद ये जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स का मैनुअल आता है, मैंने ये भी रेफर किया था। इसमें आप सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स देख सकते हो। और उसके बाद लास्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय वनगमोदी, कविता एंड राजा। तो इसमें मैं क्या करती थी कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं सीड साइंस के कवर नहीं कर पाई थी, तो मैं इस बुक को पढ़ती थी। फिर मुझे कुछ टॉपिक्स मिलते थे जो शायद मैंने कभी नहीं पढ़े होते थे, जैसे कि सीड सेपरेशन बेस्ड ऑन कलर टेक्सचर। फिर उन टॉपिक्स को सर्च करती थी यूट्यूब पे, गूगल पे, जहाँ पे भी वो टॉपिक्स मिल जाए। जैसे फील्ड काउंट्स हो गया, तो फिर वैसे करके अपने नोट्स बनाती थी। मैंने एक रिवर्स स्ट्रेटेजी थी कि ऑब्जेक्टिव बुक को देख के टॉपिक निकालो और फिर अपने नोट्स बनाओ। और टीएनयू के नोट्स भी काफी अच्छे हैं सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और यूट्यूब वीडियोस, आपकी भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है सीड साइंस के लिए, तो जैसे भी जिसे कंपैटिबल लगे। Okay. So this is regarding the complete preparation for the seed science and technology. Okay, that's यस nice. सर। Next, microbiology. सर माइक्रोबायोलॉजी के लिए सभी सजेस्ट करते हैं दिस बुक बाय टोरो एंड कपूर। एंड मैंने पर्सनली ये बुक पढ़ी थी, लाइक दैट सेम थिंग, फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 चैप्टर्स। बट जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है वो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक रहता है, उसमें वो ऑर्गेनिज्म याद नहीं रहते हैं, उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उससे आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे नाइट्रोजन एसिमिलेशन है इसमें, में आपका कंपोस्टिंग का चैप्टर है, बायोगैस का चैप्टर है। और स्टार्टिंग के चैप्टर्स में इसमें बैक्टीरिया के बारे में आपको जो उसका स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी था, फिर बैक्टीरिया का जो भी उसके यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स सेल में डिफरेंस, वो सब चीज आप इसमें से कवर कर सकते हो। Okay. So उसके एंड साथ साथ like YouTube का वीडियोस और यूजी का क्लास नोट्स like you have यस referred for this microbiology. Okay. This is all about the major subjects. Now like let's start with the minor. यस सर। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ अपने यूजी के क्लास नोट्स रेफर किए थे, दे आर मोर देन इनफ। Okay. एंड ट्वेल्थ में भी एक चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स, तो आप वहां से भी अपना कंसेप्ट थोड़ा और बिल्ड कर सकते हो। Okay. So this is how like you have prepared for backends. Okay. That's very precise and simple.
next for general agriculture? तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए अगेन लाइक अरुण कात्यान और नेमराज सुंदरा, दो बुक्स लोग रेफर करते हैं, बट Mhm. मैंने नेमराज सुंदरा नहीं पढ़ी थी बिकॉज लाइक उसमें बहुत ही ज्यादा क्रिस्प नोट्स थे और वो मैं शायद मेमोराइज नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अरुण कात्यान पढ़ा था, वॉल्यूम 1 स्पेसिफिकली, वॉल्यूम 2 मैंने नहीं रेफर किया था। और वॉल्यूम 1 में भी अगर आप देखें तो जो फील्ड क्रॉप्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहती है। देन आपका जो आईसीआर का सेटअप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं वहां से। लाइक लास्ट ईयर पूछा गया था शायद कुछ डायरेक्टर जनरल प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर सोसाइटी से रिलेटेड। इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आप इससे पढ़ सकते हो और अपने क्लास नोट से, क्योंकि एक्सटेंशन से लाइक कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इस साल नहीं आया था, लास्ट साल आया था। और जो रीसेंट रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से, जो कि 2023 में ही लॉन्च हुई थी। तो सिर्फ इन पॉइंट्स पे आप फोकस कीजिए, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। लाइक सॉइल साइंस से अब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस नहीं आते, तो इस बुक को भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस सेलेक्टिव आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। Okay, so this is how like you have covered the general agriculture. Students, like Amini has also clearly mentioned like the important topics that you have to prioritize in the case of general agriculture, like agronomy, stats, like regarding the ICR setup, like regarding the positions and the post who is holding the specific positions under the ICR systems, and also the list of institutes and where they are located, and also regarding the agriculture extensions, like the schemes. So these are all the important things that you have to focus on in the general agriculture. Along with this, I would also suggest you to go for the recently released varieties that are also very much important. And in general agriculture, make sure that you also read entomology. Okay, so this is also one Yes. important subject for general agriculture in case of plant sciences subject. Okay, okay. Next. सर मैंने स्टेट्स इंक्लूड किया है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेट्स, सर बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने यूजी का कोर्स भी अच्छे से पढ़ा होगा ना, उसके बाद उससे बस आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो Oh, एक दो क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन। mhm. So this is for stats. Stats, like I would also recommend you to just go through the basic course of the statistics and basic notes of the statistics, because like very simple questions will be asked in the exams. That will be for sure. So make sure to cover the statistics part. Don't neglect it. यस सर, स्पेशली द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वो दो टॉपिक भी करोगे तो वहां से भी Experiment आप use. क्वेश्चन बना लोगे। Yes. Okay. Next, agriculture extension, like you already said, like UG nodes and the recent rural development schemes. And also like यस। students can also refer the current affairs. Like I have to look at the current affairs part and just be thorough with this, because like it might not be the same. Like हर साल मतलब current affairs से पूछते हैं ऐसा नहीं है। अगर इस बार नहीं यस। पूछना है इसका मतलब नहीं है कि next बार भी नहीं पूछेंगे। Like as a agriculture students, we have to definitely go for current affairs if we are facing any exams, including this ICRPG. So make sure that you also cover the few parts of current affairs which are in trending, from which you can expect the questions in any exams. Okay. Next, plant physiology. सर फिजियोलॉजी अगेन, इसमें जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, एसेंट ऑफ सेप, ऐसे टॉपिक्स रहते हैं। तो इसे आप एनसीईआरटी से 11th-12th एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब को रेफर कर सकते हैं, और कोई भी नीट प्रिपरेशन वीडियोस और यूजी नोट्स, वहां से ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। Okay. And additionally, I would try to simplify this. Like, see, whenever you go for plant physiology, just make sure at least you cover these two topics. यस सर। So these रेस्पिरेशन। are mandatory and necessary. You have to यस। compulsory cover this respiration and photosynthesis and also nitrogen fixation. So these are like the topics that we have been studying from 11th and 12th. So we have to be very thorough with these three different topics, because like obviously questions will be asked from these only. Along with this, like we can go for other topics in the plant physiology, but you have to at least prioritize these things if you are studying or skipping major content of plant physiology. If you are trying to read everything, that's good. But if you are only picking the very important ones, you have to at least cover these three different topics. Okay. This is for plant physiology. Next.
And the thing I have mentioned here is like you have to know the recent trends, okay? You can't go blind with the subject कि जैसा like किसी टॉपर ने कहा है वैसा ही आपको करना है. Like look at the last 10 years question papers and I'll say after 2020, look at those question papers. You will get to know, you will get an idea of the recent trends कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते थे बट अब नहीं आ रहे हैं. तो उसको एनालाइज करके मैंने स्टैट्स कवर किया था एंड उससे क्वेश्चन आया था. मैंने एक्सटेंशन भी कवर किया था, क्वेश्चन नहीं आया बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके लिए वो क्वेश्चन नहीं आएगा. फील्ड क्रॉप से भी क्वेश्चन आते हैं. लाइक लास्ट ईयर पोटैटो से भी क्वेश्चन आया था, तो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स भी आप एक बारी देख के जाइए. और जैसे जीआई टैग्स हैं उन पर लास्ट 3 ईयर से क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने वो भी कवर किया था. बहुत सारे जीआई टैग्स पड़े थे बट इस बार वो क्वेश्चन नहीं आया. बट यू हैव टू हैव एन आइडिया लाइक क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं. और करंट में जो भी इम्पोर्टेंट वेराइटीज लाइक अभी इंडियन बासमती का जो डिस्प्यूट था पाकिस्तान के साथ, कुछ वैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है अगले साल उसमें से क्वेश्चन आ जाए, इस साल नहीं आया. तो यू हैव टू नो देम. Yeah, so this is very much important. This particular slide is very much important. तो वो काफी ज्यादा important हो जाता है क्योंकि जब भी कोई मतलब स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, सिर्फ टॉपर्स का वीडियो देखने से सब कुछ क्लियर नहीं होगा. सो टॉपर्स का वीडियो के साथ साथ अपना खुद का एनालिसिस भी करना होगा. एनालिसिस में ये चीजें इंक्लूड करना है कि डिटेल एनालिसिस करो कि कैसा ट्रेंड जा रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं और ईयर बाय ईयर का कोई पैटर्न दिखने को मिल रहा है. वो सारा चीज हम कोई भी स्टूडेंट को देखना होगा. And also with this, like they have to go through this previous year question paper analysis where they will analyze each and every topics or each and every subjects, and based on that, like we have to predict like from which of the areas you can expect the questions. तो उनको जो जो भी areas है, जैसे कि यामिनी ने यहाँ पे predict किया था कि stat से questions आएंगे, like agriculture extension से questions आ सकता है और important field crop से आ सकता है. ऐसे like you have to make your own list and you have to prepare accordingly. So this is how you can crack these exams with a very good track. अपना खुद का एफर्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. चाहे तुम आप लोग कोई भी कोचिंग ले रहे हो नहीं ले रहे हो, अपना खुद का एफर्ट्स डालना होगा. और एफर्ट्स ऐसा डालना है कि तुम लोग यहाँ पे एनालिसिस करो और अपना खुद का एक चार्ट बनाओ और इसका एक रखो कि एक्सपेक्टेड चीजें रखो कि ये आ सकता है, उन पे फोकस करो, रिवाइज अच्छे से करो. ओके, next. So this is everything about the preparation strategies and the list of books and the topics the Amini has referred for this exam. और Amini ने बहुत अच्छे तरीके से काफी कुछ एक्सप्लेन किया है अब तक कि कैसे कैसे टॉपिक्स को उसने ब्रेक करके कैसा प्रिपेयर किया था और कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स उसने रेफर किया था. नेक्स्ट, लाइक विल कम टू द समरी ऑफ द ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बाय Amini. सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्लो ऑफ सब्जेक्ट्स. यामिनी, तुमने सब्जेक्ट्स को कौन कौन से कवर किए थे? जस्ट गिव मी द लिस्ट. सर सबसे पहले जेनेटिक्स, ओके. फिजियोलॉजी के जो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस टॉपिक्स है वो मैंने बहुत सबसे शुरू में आई गेस मैंने सेल पढ़ा था, सेल डिवीजन. देन मैंने वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वो कोर सब्जेक्ट्स कवर किए थे. ओके. And उसके बाद मैंने जेनेटिक्स पढ़ा था. जेनेटिक्स के बाद ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के बाद पैथोलॉजी, देन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. और बाद में जो माइनर सब्जेक्ट्स बचते थे जैसे कि स्टैट्स, एक्सटेंशन, उन्हें आप लाइक लास्ट 2-3 मंथ्स में आप उन्हें देख सकते हैं. सो दिस इज योर फ्लो ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव कवर्ड फॉर दिस एग्जाम्स. ऐसा यस नहीं है सर. कि इसी फ्लो पे सबको जाना है, लेकिन आई जस्ट यस. वांटेड टू नो अबाउट द फ्लो ऑफ यामिनी हैज फॉलोड. So according to your convenience, you can start from any subjects, but if you want to have a clear cut continuity, I would suggest you to go for genetics, breeding, and then plant pathology, and then you can either choose CTech or EMP. But I think this is the best flow that you have to follow because there is a lot of things that will be overlap between the subjects. So if you want to Yes. understand something from plant pathology, which is of a part of genetics, then obviously like all your basics should be covered. So always start with genetics, then go for breeding, and then for plant pathology. So that will be Yes. the best approach, which most of the students will follow, including Amini, like what she has followed. Okay. Next, like what is the duration of your preparation?
Sir, like from seventh semester, Okay, like like last one from year. no, sorry, sir, like from fifth semester, from third year. Okay, last 2 years. Like you are almost prepared for 2 years for this exam. Yes, sir, for 2 years. And the average hours of study, like on an average, like how many hours like you were studying? सर आई वॉज वेरी फ्लेक्सिबल विद माई स्टडिंग आवर्स लाइक जब शुरुआत की थी तो उस टाइम पे अपने कॉलेज के कोर्सेज भी थे तो इस सब्जेक्ट को लाइक मैं दिन में शायद 2-3 घंटे देख पाती थी Okay, and basically you देन study like 2-3 hours. या पर डे बीच में थोड़ा ऑफ भी हो जाता था क्योंकि हमारे थोड़े ट्रिप्स रहते थे कुछ ना कुछ प्रोग्राम थे तो ऑन एंड ऑफ होता रहता था Okay, देन फोर्थ ईयर में मैंने इसे आई गेस 5-6 घंटे देना शुरू किया था इस सब्जेक्ट को okay. So overall एंड per सर day like you are giving 5 to 6 hours for reading. यस सर एंड फोर्थ ईयर में जब लास्ट सेमेस्टर बचा था उस टाइम पे 7-8 घंटे हो जाता था Okay, last लाइक semester. What about last few yes months if you take? so last few months like 9 hours Okay, like nine. last 2-3 months 9 hours yes sir Last 3 months. Let us take last 3 months on an average, like 8 to 9 hours. 9 hours Okay, yes so sir this is like your average hours of study. Yeah. सर लाइक आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो क्योंकि बीच में आपके इरावे ईएलपी आपके टूर्स ट्रिप्स होते On हैं an तो उस टाइम average, पे आप like, so this is how it is. But beach mein obviously like based on the academic schedule, the hours might yes differ. But on an average, this is how much like you have been invested in your preparation. Okay, that's great. yes And if you are from plant science, this is a very common questions that everyone will ask. Like, and you might have also asked to your seniors like whether to go for BD or for Pundan Singh. So this is very much clear for genetics. Genetics में ज्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट्स नहीं है लेकिन ब्रीडिंग पे स्टूडेंट्स को वही डाउट है कि बीडी सिंह पूरा पढ़ना चाहिए या पुनन सिंह से काम चल जाएगा लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट? सर आई सजेस्ट कि बीडी सिंह ही रेफर करें ओके। अगर बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कुंदन पे जाइए क्योंकि रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो आप बीडी सिंह से लाइक लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आ जाते हैं बीडी सिंह आपको ब्रीडिंग का तो थॉरो जाना है लाइक फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर मैं तो थॉरो गई थी तो कुंदन सिंह मैंने पर्सनली रेफर नहीं किया था ओके फाइन। So next is like about the mock test. Like यस सर how mock test played a role, like how where do you keep this mock test in your preparations, like what priority will give, like you have attended many mock tests or you have attempted only limited mock tests during your preparations, like how is your preparation, because जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है वहाँ पे ज्यादातर तुमने मॉक टेस्ट के बारे में इतना खास मेंशन नहीं किया था, so like during your preparation, like how was it? So I have given like a good number of mock tests, but उतने ज्यादा भी नहीं उतने कम भी नहीं. So mock tests are like very very important and Mhm. the good mock tests are important. मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से mock test दिए हैं. So like Mhm. अब मतलब मुझे सिर्फ पर्सनली लाइक ऑनेस्टली मुझे सिर्फ एग्री एडिट के मॉक टेस्ट ऐसे लगे थे जो ट्रू टू आईसीआर पैटर्न थे जहां आपको अजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं बाकी Mhm. सभी जगह पे लाइक बेसिक क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप बिना पढ़े भी दे सकते हो आपको वैसे मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे तो सबसे पहले लाइक गुड मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए ऐसे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लाइक आई हाईली सजेस्ट टू बाय मॉक टेस्ट सीरीज बाय एग्री एडिट एंड मॉक टेस्ट को आपको बहुत अच्छे से अटेंड करना चाहिए मैंने शायद थोड़ा सा लाइटली ले लिया था मॉक टेस्ट को इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके एग्जाम अटेंडिंग जिस तरीके से आप अपना एग्जाम लोगे मेरा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गया था लाइक फर्स्ट आवर में मैं शायद 50 क्वेश्चन ही कर पाई थी सो आई वॉज लैगिंग बिहाइंड लाइक अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से देते हो तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा टाइम मैनेजमेंट का आप गलतियां कम करोगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके जब जब आप प्रिपरेशन शुरू करो तब से ही आप मॉक टेस्ट अगर लगाना शुरू कर दो सब्जेक्ट वाइज So it सो will दैट help विल in बी the वेरी preparation. गुड यस Okay. So this is regarding the mock test. And like one more question, like did you feel like any subject difficult while preparation? If yes, like how did you handle it? सो लाइक एट फर्स्ट लाइक जेनेटिक्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा था मुझे आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट बट देन जेनेटिक्स हो गया था बिकॉज आई हैड अ स्टैंडर्ड बुक मुझे पता था कि बीडी सिंह ही कवर करना है
देन पैथोलॉजी मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि जब भी मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जाती थी प्रीवियस ईयर्स के, तो कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब पता नहीं कहाँ से ही आ जाते थे। तो लाइक उसके लिए कोई ऐसे एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। वो सब्जेक्ट मेरा वीक पॉइंट था। मैंने उसे मैनेज करने की कोशिश की थी कि ऑब्जेक्टिव बुक्स ले लूं या फिर कुछ ई नोट्स पढ़ लूं, बट वो उतना हो नहीं पाया था। तो पैथोलॉजी मैं कहूंगी कि उस पे अगर आप थोड़ी इस पे ज्यादा पकड़ बनानी चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स और ब्रीडिंग हो जाता है, बीडी सिंह से हो जाता है, पैथोलॉजी वी नहीं हो हैव पाता स्टैंडर्ड उस। बुक्स लाइक जेनेटिक्स में, जो चाहे डिफिकल्ट हो या इजी हो, पूरा बुक पढ़ने यस। से काम हो जाएगा। लेकिन प्लांट पैथोलॉजी के लिए जो सोर्सेस है वो मतलब बहुत सारे हैं, और क्वेश्चंस भी ऐसा आते हैं कि एक बुक से पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, काफी ज्यादा यस। सोर्स को रेफर करना होगा, वहां पे डिफिकल्टी होता है। तो उसका सोल्यूशन वही होगा कि ज्यादातर सोर्सेस को पढ़े, और जब भी पढ़ेंगे थोड़ा फिक्स वे में एक प्रायोरिटी रखे कि क्या टॉपिक्स है, कौन को प्रायोरिटी देना है, कैसा पढ़ना चाहिए, उसको एनालाइज करके उसको ऐसा पढ़ने से मतलब प्लांट पैथोलॉजी भी काफी हद तक इजी बन जाएगा। Okay. So this is यस। regarding the last questions that you have answered. I hope like this is the overall summary of your preparation. Like students like जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, like definitely that they will be getting a lot of benefit about like how Amini has prepared for our exams and what are the different books and the references she has used during her preparation. And I guess like she also given you some of the tips and tricks that you have to follow during your preparation. So to end up this session, like I have two important questions that many students usually ask even us also. So Yes. I just want you to answer these questions. Like these questions will be answered for every topper who will be getting the interview from Agri. So what do you feel like the coaching is necessary for this exam preparation? So what's your opinion on this? So I say coaching, like necessary, the word I will not use necessary for coaching. Like Mhm. अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। Yes. बट लाइक कोचिंग्स आर लाइक रियली हेल्पफुल, दे विल रियली हेल्प यू। लाइक इस साल भी मैंने देखा था कि एग्री एडिक्ट से बहुत ज्यादा टॉपर्स निकले थे। शायद Mhm. मैंने एक पॉइंट पे मैंने भी सोचा था कि काश एग्री एडिक्ट का कोर्स ले लिया होता तो अच्छा रैंक आता। बट जो भी है, तो नेसेसरी नहीं बोलूंगी, बोलूंगी कि बहुत कि डायरेक्शन कोचिंग आपको प्रोवाइड करती है कि आप बीच बीच में आप डेविएट हो जाते हो। अगर आप अपने एंड पे स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ पता है, जैसे मेरे केस में पैथोलॉजी एक थोड़ा सा वीक सेक्शन था, तो मैं वहां पे शायद डेविएट हो गई थी। तो अगर आप कोचिंग में हो तो वहां से आप एक सही डायरेक्शन पकड़ सकते हो कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड एट द एंड ऑफ डे लाइक पढ़ना आपको ही है, कोचिंग्स आपको असिस्ट ही करेंगे। Yes, like that's what like even I mentioned in the previous slides. Like see, it's not it's only about the person like who is actually preparing should give the best efforts. All the other things are supplementary, which will make something easy. But ultimately, student should have that motivation, and he should put himself or herself in a way that they will be giving the best, getting the best results. Or like even if like if you have not taken this master course, at least like you have been associated with the mock test, and also like you have been accessed with the YouTube videos. Like I'm very happy that these things have helped you in your preparation, and this helped you in achieving these good marks. And obviously like it's your hard work and the way you have analyzed these exams and way you have approached the questions that has given you a fruitful result. Thank you so much. एंड लाइक कोचिंग लाइक मैं भी अगर मेरा खुद का ओपिनियन देना है, तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरा ऑल इंडिया 48 रैंक था 2020 में, और मैंने भी कोई कोचिंग से नहीं किया था, सेल्फ स्टडी करके ही मतलब मैंने 48 रैंक निकाला था। लेकिन जब भी मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, लाइक आई फेल्ट सो मेनी थिंग्स दैट वर डिफिकल्ट फॉर मी पर्सनली, बिकॉज लाइक आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। इतना भी मतलब काश सीजीपीए नहीं था मेरा, बिलो 6.5 लाइक 7 ही था मेरा यूजी का। So like I felt a lot of things that were difficult while studying, and that is how I like was motivated to start the classes, and I was basically interested in teaching. So I would also personally recommend like other, like you are capable enough, like you have sufficient time that you can utilize and invest in preparing any of the exams, like you need not need any assistant or coaching. And also like we along with the paid coaching, we are trying our best to provide the free quality content in our YouTube channel. And also like there are regular quizzes that goes in our Telegram channels, and also in the WhatsApp free groups. Like there will be a lot of discussions that will be going on. Our mentors are actually active in every platform where they will answer the questions of
each and every students. Like we are also making the best efforts where like koi bhi student, like if he's not able to afford the coaching, paid coaching, like we'll assist them in a with the help of the YouTube videos also. So we are also planning for the revision series for this year. So that will be definitely uploaded in the YouTube. All we expect is like the kind of love and support for our platform. Okay. So the very next Yes. question, like any final suggestions to upcoming ICR PG aspirants? Any final words from your side? So I'll say keep your resources minimum and try to revise it multiple times Okay. and give regular mock tests Mhm. and like solve previous 10 years question papers. Like you can literally cram those question papers because there's a lot of repetition, at least in this subject. That's it. And like be consistent with this subject, like give at least 1 hour a day, if not more than that. Try to give at least 1 hour a day. Be consistent. So attend previous year question papers and be consistent throughout their preparation. So consistency is something. See, even if you are preparing for only 1 hour per day, but if you are doing it for the complete year, that will make a lot of difference. Even if you are contributing, like investing only 1 hour. So consistency Yes. is a key. So no matter like you are studying for 10 to 12 hours for single day and next day you are next whole week you are leaving your studies, then that doesn't give the fruitful results. So it Mm. is only the consistency that will matter a lot during preparation for any exams, including this. So this is what I personally suggest you. Okay. Thank you Yes. so much, Amini, like for providing the detailed insights about the different things that you have experienced and different things that you have followed during your preparation. And I thank you so much for your time that you have given sufficient time to prepare this PPT and also share the valuable information and attending this session. So to wind up, I just want to give the information to all the upcoming juniors regarding our batches. Like we have come up with the two different batches called as Shrestha and Samartha. These are like a target batch 2025 and the foundation batch 2026. The difference between these two batches is the validity. The validity of Shrestha is 1 year. That is like it will be valid till the exam day of 2025. And foundation batch, the validity will be of 2 years. And other difference is like you'll be getting live class, recorded classes of 2024 batch and fresh live classes for 2025 in case of Shrestha. And for foundation, you will be getting recorded classes of 2024, fresh live classes of 2025, and also fresh live classes for 2026 batch. So this is the clear-cut course features. Like course features include the live plus recorded classes, the complete study materials, and also the a complete mock test bundle, which includes topic wise, subject wise, and whole syllabus, and one-to-one guidance from our mentors, and like previous year paper discussions. Like everything is included, which is actually required to crack these ICRPG exams. As you can see, there are a lot of toppers who have secured very good rank, and they were all satisfied with the kind of content that was provided from Agridit. We just want to continue this legacy and help more and more students who are actually preparing for these exams. So our courses include plant sciences, physical science, entomology, agronomy, social science, and horticulture. So if you are interested to enroll any of these subjects, you can visit our website www.agridic.in, or you can directly download our mobile application for Android or iOS. Or if you have any specific queries, you can contact me on this number for any kind of clarifications. And if you are watching this video, you can also convey this to your other friends who are preparing for the other subjects and take them to our platform and support us, and we'll definitely try our best to assist you in your preparation. Thank you so much. And Yamini, I once again thank you so much for giving your precious time to this session. And she will be available on the YouTube channel. Like, so if you have any specific doubts that you want to ask to Amini, you can comment on this Yes. video and she will be happy to assist you people. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.